एक नया नियम, पूरी सुरक्षा। नमस्कार। भारत में अब 13 पुराने कानूनों को हटाकर उनकी जगह सिर्फ एक OSH कोड 2020 लागू कर दिया गया है। वन कोड, टोटल सेफ्टी। इंडिया का OSH कोड 2020। समझिए आसान भाषा में। इमेजिन करिए 13 अलग अलग सेफ्टी लॉज, हर एक के अपने रूल्स, अपने फॉर्म्स और एंडलेस पेपर वर्क। गुड न्यूज ये है कि अब ये केओस ऑफिशियली हिस्ट्री बन चुका है। 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस यानी OSH कोड 2020 ने इंडिया के वर्कप्लेस लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये 13 सेंट्रल लेबर लॉज को, जिनमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 शामिल हैं, एक यूनिफाइड लेजिस्लेशन में कंसोलिडेट करता है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? OSH कोड रेड टेप को कम करता है और इंडस्ट्रीज और स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी लाता है। मल्टीपल फाइलिंग्स मैनेज करने के बजाय अब बिजनेसेस को एक स्ट्रीमलाइंड वन रजिस्ट्रेशन, वन लाइसेंस, वन रिटर्न सिस्टम का बेनिफिट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वर्कर वेलफेयर को स्ट्रेंथन करता है। ये फैक्ट्रीज, माइंस, डॉक्स, प्लांटेशंस, मोटर ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सेफ, हेल्दी और इक्विटेबल वर्किंग कंडीशंस गारंटी करता है। वैसे तो ये कोड जनरली 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स वाले एस्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई होता है, लेकिन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए थ्रेशहोल्ड्स एडजस्ट किए गए हैं। फैक्ट्री लिमिट बढ़ाकर 20 वर्कर्स पावर के साथ या 40 वर्कर्स बिना पावर की गई है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर थ्रेशहोल्ड 50 वर्कर्स तक बढ़ाया गया है। एक क्रूशियल बात, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो हैजर्डस एक्टिविटीज करता है वो कवर होगा, चाहे वहां सिर्फ एक एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। रियल वर्ल्ड हाइलाइट्स। जॉब सिक्योरिटी। हर एम्प्लॉय के लिए अपॉइंटमेंट लेटर अब मैंडेटरी है, जो फॉर्मल और सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करता है। हेल्थ फर्स्ट। प्रिस्क्राइब्ड एज से ऊपर की वर्कर्स और हैजर्डस सेक्टर्स में काम करने वालों के लिए फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स। इंपावरिंग विमेन। अब विमेन सभी एस्टैब्लिशमेंट्स और सेक्टर्स में काम कर सकती हैं, इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स और डेंजरस मशीनरी पर भी उनकी रिटन कंसेंट और गारंटीड सेफ्टी मेजर्स के साथ। वर्क लाइफ बैलेंस। एक स्टैंडर्ड 8 आवर वर्क डे। ओवर टाइम के लिए वर्कर की कंसेंट जरूरी है और उसी नॉर्मल वेज रेट से 2 गुना रेट पर पे किया जाएगा। OSH कोड 2020 सिर्फ एक लीगल अपडेट नहीं है, ये एक मेजर लीप फॉरवर्ड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्ल्ड क्लास सेफ्टी और वेलफेयर स्टैंडर्ड्स के साथ बैलेंस करके ये एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों के लिए जेन्युइन विन विन बनाता है। वन कोड, वन फ्रेमवर्क, एक फ्यूचर रेडी इंडिया के लिए कंप्लीट सेफ्टी कवरेज। To see the scale of India's industrial workforce, you only have to look at the continuous, high-speed movement across its ports and factory floors. Millions of people keep the gears of a massive economy turning every single day. But historically, managing that labor force required navigating a bureaucratic nightmare. For decades, an employer had to comply with 13 separate labor codes at once, including the Factories Act of 1948, the Mines Act of 1952, and the Contract Labor Act of 1970. This web of overlapping rules created a dual failure. The endless filings and contradictory forms choked business expansion, while the sheer complexity left massive blind spots where actual workplace safety went unaddressed. That fragmented system is being replaced. Effective November 21st, 2025, the government is rolling out the Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code, commonly known as the OSH code. The code navigates the friction between deregulation and human safety. It sets out to strip away decades of red tape while simultaneously setting new, mandatory standards for the protection of life on the job. This shift reflects a specific economic logic. National growth requires a unified framework. Solving the conflict between business efficiency and labor rights is the only way for the industrial sector to function at a global scale. From the perspective of a business owner, the OSH code aims to lower the administrative cost of operating in India. This diagram outlines the new administrative reality. Instead of managing a mountain of separate filings across different states and sectors, operations are streamlined into a system of one registration, one license, and one return. The specific legal thresholds that trigger compliance have been adjusted. The limit for factories is raised to 20 workers with power and 40 without it. And for contract labor, the threshold shifts even higher, sitting at 50 workers. These specific increases give small and medium-sized enterprises room to expand,
They can now hire more people and scale their operations without immediately triggering the heavy compliance costs that often stunt growth. But raising those limits invites a question. If headcount thresholds are higher, what happens to workers on the smaller, unregulated sites? This visualization shows the code's ultimate fail-safe. If an establishment carries out hazardous activities, all headcount thresholds are discarded. A site with even a single worker dealing with dangerous materials is bound by the exact same safety mandates as a massive factory. This is a direct response to the historical reality of heavy industries. For generations, laborers in sectors like mining and construction have faced immense physical risks, often operating entirely outside the margins of legal protection. To correct this, new rules mandate written appointment letters for all employees, and for older or high-risk workers, free annual health checkups. The legislation also dismantles restrictions on female employment. Women are now permitted to work in all establishments and sectors, including night shifts and roles operating dangerous machinery, provided the employer secures their written consent and enforces specific safety measures. Daily schedules are regulated as well, with the law setting a firm 8-hour standard workday across the board. If an employer needs a shift to run long, they must secure the worker's explicit consent. Every extra hour of overtime must be compensated at twice the normal wage rate. These provisions ensure that a streamlined business environment does not rely on a disposable workforce. Workplace safety and fair compensation become universal guarantees across every sector of the economy. The OS code operates on the premise that a company's ability to scale depends on the stability and safety of its workforce. India is systematically stepping away from an era of scattered mandates and moving toward a highly organized, legally protected standard of operation. Replacing 13 separate laws with a single rulebook lowers the barrier to entry for businesses, while clearly defining the uncompromisable rights of the people actually doing the work. By aligning the financial needs of the employer with the physical security of the employee, this unified framework provides the structural stability needed for a modern industrial economy to function.